समोर कॅमेरा समोर बघून माणसं बघून घाबरणार. पुण्याला आलो मी घाबर. नीरज सर, वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. इनकी कई सारी फिल्में बेहतरीन से बेहतरीन रही है, जैसे कि बेबी, रुस्तम और टॉयलेट एक प्रेम कथा और काफ़ी सारे हैं. तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके जो फिल्म्स रहे हैं तो वो हमेशा इंस्पिरेशनल या फिर इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पे रहे हैं. तो इस फिल्म की जो टॉपिक है, कंटेंट है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग आए हैं यहाँ पे, एंड बिग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टर्निंग अप एट दिस वेन्यू. द फिल्म इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस, इट्स वेरी रेलिवेंट, विच इज़ द रीज़न वाई वी एंडेड अप मेकिंग इट. और एक मलयालम फिल्म थी इश्क करके, एंड नॉट अ लव स्टोरी. The producer of that film approached us and said that he would be interested in doing a Hindi adaptation of this. That's how the journey started. We didn't know about the film. Me and Sheetal, we ended up watching the film. We fell in love with the way that entire issue was addressed. And then from then, we got in touch with Sashant. The team got around, the cast came on board, and we ended up making this film. सर, इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे? ये we've got different points of view on this. Moral policing एक हद तक जो है we don't want any intervention. हमारे जो निजी private life जो होते हैं उसमें आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई बाहर वाला जो है उसमें दखलंदाजी करे. At the same time we've had issues and instances from all over the country जहाँ लोग आपको जज करते हैं कि आपने क्या पहना हुआ है, आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, आप किसके साथ बैठे हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, किस प्रॉक्सिमिटी में बैठे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो ओवर द इयर्स we've realized that all of us in some form or the other we've been subjected to some sort of moral policing, either through a look, through a gaze, या कोई आकर कुछ बोला है. But we all have been in similar circumstances. It could be light, it could be very disturbing. But हम लोग जब when we started talking about it, we realized that all of us have gone through this. We are in a very vulnerable position. उस वक्त जब आप अपने किसी friend के साथ या अपने wife के साथ या बहन के साथ अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बड़े vulnerable होते हैं उस समय पे, and there are people who take advantage of that situation, and you are very helpless at that point of time. You don't know what to do, whether you want to be safe and then address that situation, or you don't know how to just counter it at that point of time. And many a time the situation goes out of hand. So for us, this film was very, very important from that point of view, where we sort of talk about something which is right around us, does exist in some form or the other on a daily basis, and something that's very relatable to all the people sitting here. I request CMO of Reliance Entertainment, Mr. Sameer Chopra, to please come on stage, and Mrs. Sheetal Bhatia. थोड़ा अंदर आइए, अंदर थोड़ा अंदर अंदर सर, थोड़ा इस साइड. सर, मैं आपसे बस एक ही सवाल करने वाली हूँ, इनफैक्ट आप दोनों से. ऑपरेशन रोमियो, ये नाम, मतलब इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Sheetal sir would be the best man to talk about the name. The original was titled Ishq Not Love Story, and we tried to get Ishq, we couldn't get it. So Sameer and the team, the marketing team, they all kept thinking that what is the right name for it, and they had come up with various options, but the last one that came up was Operation Romeo. We all loved it. मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारी जानकारी इस फिल्म के बारे में ली है. चलिए तो इस फिल्म का ट्रेलर अभी हम देखते हैं और फिर इसके बाद एक्टर से भी बात कर लेंगे.
Hello, mic check. Hello. Thank you so much, first of all of you. So the softer version था मेरा. Okay. हाँ. I thought you started बस already. सर याआधी तुमचे जे सिनेमे आलेले आहेत तर त्यामध्ये नेहमी नायकाच्या भूमिकेत आम्ही तुम्हाला पाहिलं होतं. तर या सिनेमामध्ये असा खलनायकाचा रोल वगैरे आहे का किंवा तुमच्या रोलबद्दल आणखी काय सांगता? हे असं नाही आहे की ह्याच्या पूर्वी जितके सिनेमा आले त्याच्यामध्ये मी नायक म्हणून आलो. लय भारी सिनेमा होता त्याच्यामध्ये मी एक खलनायक होतो. बरेच सिनेमा आले जिथे एक खलनायक होतो, कुठे नायक होतो. तर ॲज अन ॲक्टर मला असं वाटतं की प्रत्येक कलाकारांनी वेगवेगळी भूमिका करायला पाहिजे. त्यालाही थोडं सॅटिस्फॅक्शन असतं आणि ऑडियन्सलाही थोडं की वेगळं मिळतं त्याच्याकडनं. म्हणून हा एक असं एक वेगळा सिनेमा आहे. खलनायक म्हणू शकता, त्याला एक डिफरंट कॅरेक्टर म्हणू शकता, पण आहे वेगळं आहे काहीतरी. लोकांना मजा येईल बघायला. थैंक यू वेरी मच सर. इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी भूमिका मैम को. सो भूमिका मैम प्लीज कम ऑन स्टेज. You know what? I am actually stunned to see you here because I was very small when I saw your first film. Thank A you. big round of applause. Can you all please welcome her? And believe me, she looks the same. Thank you. Sorry to interrupt you in the middle of your starting the show. Every time someone says मैं बहुत छोटी थी या छोटा था जब आपकी पिक्चर आई, I feel like saying मैं भी बहुत बड़ी नहीं थी. Thank you. That's really sweet of you. Thank you. Alright. Ma'am, we would like to know more about your role in this film. No, you don't have to reveal everything, but just a little bit of information. Do I have an option of KBC? दूसरा question मिलेगा. Alright, you can just tell us about your journey with working everyone. So, this movie is very special for me, and the journey has been extremely, extremely amazing and special. Reason one being, you know, when I got a call from Neeraj sir, I've done a film with him, and there is someone in his office who knows who I talk to, and I always say that for me, working with him and his team is not just as a professional under his wings. I want to associate with him because I don't even know if he knows that in his own silent ways or unknown ways, he lands up teaching people so much more about, people go and learn human resource and stuff. The way he manages people and the show is amazing. It's absolutely. So that was part of the reason that I wanted to join him. I saw the film and I loved the character. I thought it was something that I hadn't done before. And for me, working with Shashank sir has been an amazing experience. I think everyone around me, my co-actors, one better than the other, what can I say? Vedika, Siddhant, Sharad, they are all amazing. Thank you so much for having me on board. And this journey is really special. Thank you very much. यानंतर मी एक वेटरन ॲक्टर आहेत आपल्यासोबत, त्यांना मी स्टेजवर बोलवणार आहे. प्लीज लेट अस ऑल वेलकम विथ अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज किशोर कदम जी. हॅलो सर. नमस्कार. मी आलो तेव्हा म्हणजे तू पैदा पण नशील झाली असं मला वाटतं. असं मला वाटतं. एनिवे विचार माझ्या रोल बद्दल मीच बोलून टाकतो. माझं काम यांच्याबरोबर आहे आणि माझं काम
Um, I request Neeraj sir and Sashant sir to please come on stage. Neeraj sir and Sashant sir, this question is for both of you. So, Neeraj sir, especially for you, you've already worked with a lot of celebrities earlier in your projects. So, I must say renowned celebrities, right? You have introduced us some fresh faces, right? So, we would like to... म्हणून सांगावंसं वाटतं मी इतकी वर्ष काम करून सुद्धा माझी पण ऑडिशन घेतली होती त्यांनी. मी पण ऑडिशन म्हणूनच आलेलो आहे इथे. वो इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं आप कितना और इम्प्रूव कर गए. मैंने पूरा एक शो किया इनके लिए ऑडिशन के तौर पर स्पेशल ऑप्स तब जाके फिल्म मिली. Oh, I think we all know that. Trailer देख के काफी मजा आया. It was quite amazing. It doesn't look like it's your first film. Vedika and Siddhant. Yeah, yes. Right. Vedika, why don't you start? So my question is to you, Vedika. You look very, very innocent, very sweet in the film. But I want to ask you, are you like that in your real life? No, I think Vedika or इतने सारे options. I think that नहीं, Vedika और नेहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, to be honest. But I would like to believe that I am very innocent. So, but Neha is a very special character. It's my first film. I just watched my first trailer, and I am extremely grateful to all of the people on this stage for giving me the opportunity and making it such a comfortable and worthwhile experience. Thank you very much, Siddhant. Would you like to tell us something more about your role? Well, my role, first of all, thank you all for being here. It's been very, 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 someone cut me because I keep saying very, very special. I think what I love about this film is the honesty of it, so I'd really like to be honest. When this film, this journey, this life found me, or I don't know if I found it, I was very lost, and this gave me direction in my life. So I would like to thank Neeraj sir, Shashank sir, and Jeetal sir for this. Thank you. It's been a great journey, and about my role, I think it's very relatable. Everyone has this. Everyone has Adi. Everyone I know in my life can relate to this character. And when I found him in myself, I got a chance to fall in love with. I got a chance to fall in love all over again. And also, I think that innocence, what I haven't felt for a long time, that I could feel. The complicated part was when it gets really intense. So that's been quite a ride. Audition process, I think every moment of this film is very special. When I met Neeraj sir for the first time, when I auditioned, and I was really confident because I felt what I had to feel in the audition. And then I met Neeraj sir, and he was like, "Why are you so anxious?" And I said, "Sir, I can feel this character, but I don't know if you can feel the same way." And we had the most beautiful conversation. And then Jeetal sir walks in, and he's like, "I like this boy." So I thought, okay. And then Neeraj sir bolte, "Acha milte hain." I said, "Sir, ये तो thriller में thriller बन रही है." So yeah, I left, and 2 days later I got a call and I got this film. And sorry, I'm excited, nervous, all of that. So I'm, I think, talking a lot. Please stop me, someone, if you feel that way. But thank you. Alright, thank you very much. Before we start question and answers with my journalist friends, I would like to invite Mr. Sheetal and Mr. Samir to please. Oh, I did not. Mr. Samir on stage. बसू नका उभेच राहा सगळे. आवाज दे, बसू नका बोल. You can all have a seat.
We are starting with the question and answer session. अगर किसी की कोई सवाल है तो हाथ ऊपर करके प्लीज पूछ सकता है. कैसे जाएंगे अभी एक तो नंबर जाना पड़ेगा. Hi, I'm Pooja Navate from Awesome TV. My question is to Vedika and Siddhant. Congratulations for your debut film. And I want to ask you, how was your experience working with such experienced actors? Did you get to learn anything from them? Would you like to share about your journey and experience with them? I think it made our life very easy the characters we were playing, because they're so experienced and it's always a give and take in the scene. So we could feel the reality of it because of what we got from them in those scenes. So I'm very, very thankful to them. I think, thank you by the way. I think that initially I expected to feel very intimidated because I've seen these actors at work and they are all exceptional actors. But somewhere along the journey I feel like the amount of guidance that we were given because of them and because of their experience is going to come a long way with me in the future, you know. So I got a lot to learn from them. And it was also just a lot of fun, to be honest, and it's a very intense film, if I may say so. And I think that the journey became a lot more wholesome because of them. Yeah. My next question is for Sharad. Congratulations, the trailer looks amazing. You're back with bad boy image again, and we love it. So, tell me, behind the scenes कुछ ऐसे practice की थी माता की? No, yeah. Bad boy. I mean, I select roles and I don't, get into the category of bad boy or good boy or a hero or a villain. If the role appeals to me, obviously, I would love to do it. And they offered me this film, Neeraj sir and Shashank sir. And they especially asked me not to watch the film. And I didn't watch the original film. I just heard the narration, I read the script, and I was loving the character. And it's a teamwork. It's not just an individual who can play a role. It's about how your co-stars are doing, how the script is. So I think overall, it's not just my effort. It's a combined team effort because there are primarily 5-6 actors only. It's not a huge star cast, and so we have to interact with each other every day, every night basically. Not day. We shot the whole film the night. So it's a wholesome effort of the team, and I'm really glad that you liked that trailer, and even I'm very excited with the film now. I was very nervous, first of all, because it's a very different and I would say difficult role, which what I am not actually in my life, and I have suffered this in my college days or in that period. So it was very difficult to go on the other side and play that character. I was always been this side, if somebody is troubling or somebody is like. So this time my side was different, the other side, and it was difficult. And I was very scared of Kishore sir. He improvises so much in the scenes. It's really scary for an actor, and it's a lot to learn from you, sir. मैं बता रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आप देखो, see the expression. डर जाएगा कोई आदमी, मतलब ऐसा है. तो मैं थोड़ा scared था. I think हम सभी थोड़े scared थे उनसे कि ये क्या improvise करेंगे अभी scene के अंदर. नहीं, पहले दिन मैं आपसे डरा हुआ था. ये वो मेरे height build है इसलिए ना, बाकी तो acting की बात चल रही है. हम सब डरे हुए थे बहुत ज़्यादा. तो but thank you sir. Once you were there, तो हमको बहुत confidence आया उससे. And Shashank sir, thank you so much for getting that particular the aspect of each character out of us. So thank you so much for that. नीरज सर और शीतल सर, आप दोनों से सवाल है यहाँ से. आपने कहा ये मलयालम फिल्म का अडेप्टेशन, लेकिन जब हिंदी में आपने बनाई तो इसमें कितने चेंजेस किए हैं और क्या कैरेक्टर्स भी चेंज हुए थोड़े बहुत? It's a very faithful adaptation. बहुत कम changes हैं. And we've been very faithful to the original. Yeah, like Sheetal spoke
It's just adapted to the extent because the story is set in Mumbai now. The basic premise remains the same. It's set over one night and that stuff like that. But we've just tried to see small little subtle changes which sort of, in our opinion, enhances and makes it more mainstream for Hindi film. ओके, तो आप दोनों से एक और सवाल है कि जब दो लोग एक साथ होते हैं तो कई बार कुछ टॉपिक्स में बात नहीं बनती है, दोनों के अलग थॉट्स होते हैं, तो आप लोग किस तरीके से किसी एक डिसीजन पे आते हैं? जैसे कि ऑपरेशन रोमियो की बात करो तो क्या आप दोनों एक साथ में अग्री हो गए थे फर्स्ट टाइम पे ही? नहीं, हमारे I mean, Shashank is the director of the film, so it was his problem to convince all of us. And basis हमारा जो interaction हुआ था शशांक को लेकर vis-a-vis the vision of the film, we felt that he's just got the soul of the content right, and he had a complete free hand in how to negotiate with the talent and the crew on this one. हाय, ज्योति दिस साइड फ्रॉम मूवीज अड्डा। सिद्धांत, मेरा क्वेश्चन आपसे है क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, द ट्रेलर इज फैंटास्टिक। बहुत ऐसे बीच में गूज़बम्स आ गए थे, अब वो इसी की वजह से है, ये ऐसा नहीं है, वो ट्रेलर की वजह से ही आए थे। तो थैंक यू बोलूं कि नहीं बोलूं? डेफिनेटली सभी को से कंग्रेचुलेशंस, बट मेरा सवाल आपसे है कि आपने टीवी से अब फिल्म की तरफ ये जो रुख किया है, ऑफ कोर्स दोनों जगह पर इक्वल मेहनत होती है और शरद सर की जर्नी भी वैसी ही रही है, तो आप पर्सनली कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि थोड़ा कुछ अगर आपने डिफरेंस महसूस किया हो? मेहनत तो उतनी ही लगती है नो डाउट, बट स्टिल आपके नज़रिए से। आई थिंक बहुत अलग टाइप की मेहनत होती है दोनों में। ऑफ कोर्स मेहनत हर काम में लगती है। टीवी में व्हाट आई फेल्ट वाज एज मच एज आई चेरिश्ड व्हाइल आई डिड इट, मुझे लग रहा था कि क्रिएटिवली आई कुडंट डू मच बिकॉज रोज सुबह सीन मिलता है, न्यू परफॉर्मेंस, so I always wanted to do something which satisfy the creative side in me. So I took a conscious decision. I made this decision that I'm going to take a break until I am ready, and yeah, and when you're ready it comes to you, and the most beautiful thing came to me. So yeah, let's see how it goes. भूमिका मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी और शरद सर की जो स्टोरी हमें ऑफ कोर्स ट्रेलर में दिख रही है, लेकिन क्योंकि आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, सो आपका, क्योंकि नीरज सर के साथ तो आप पहले भी काम कर चुके हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी तीनों एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, अगर आपको शेयर करना चाहें? मैंने पहले भी बोला कि मेरा जो एक्सपीरियंस इस फिल्म में रहा है विद द टीम, विद द डायरेक्टर एंड माय को-एक्टर्स, बहुत ही बेहतरीन रहा है, बिकॉज ईच एक्टर हियर इज they bring out the best in you. So I believe that an actor is as good as his co-actor and director. और मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानती रही हूँ, तब भी और आज भी। मुझे लगता है कि अगर मेरे आसपास के जो सराउंडिंग्स में परफॉर्मर्स हैं और जो डायरेक्टर है, जितना अच्छा वो करेंगे उतना अच्छा मैं कर पाऊँगी। तो आई थिंक विद शरद सर द एक्सपीरियंस वाज ब्रिलियंट। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। हमारे जो सीन्स रहे हैं बहुत इंटेंस, extremely intense and really nice. I didn't have I didn't have scenes with Vedika, but I had here with Siddhant. Experience with this Siddhant has been brilliant because I observed that he really went into the character. He was in one trance all the time. वो एक होता है जो आप डिस्को में जाके ट्रांस सुनते हैं, और एक होता है एक आप कैरेक्टर पूरा अपनी सोल और आत्मा और दिल में ले चुके हैं. And I observed that and I felt. So my experience working with him has been brilliant, and I wish. Thank you so much, so much. I wish you all the best, and I'm really praying, and I believe that you have a really long way to go. God bless you.
भूमिका, क्वेश्चन है आपसे। फिल्म में सिद्धांत आपकी अख को पीछा कर रहे हैं आपका, तो रियल लाइफ में कभी इस तरह के कोई ऐसे साइको फैन या कह ले प्रेमी का सामना किया है? सी नीरज सर ने बोला जब शुरू में ये यू नो डे जब शुरू हुआ, ही सर ऐसी चीज़ें या हमने देखी हैं या सुनी है या हमने किसी के साथ करी हैं, किसी ने हमारे साथ। तो यस डेफिनेटली आई हैव हैड मोस्ट ऑफ माई जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग थ्रू द लास्ट 2 decades ऑफ माई करियर, बट आई डू ऑब्जर्व, मेरे साथ साउथ में एक बार हुआ था, मैं किसी स्टोर ओपनिंग के लिए गई थी and it was quite a experience for me because someone just pounced, and by the time the bouncers could come, वो जो psychos होते हैं उनके लिए 1 second बहुत होता है, a split second is enough, उसमें आपको सोचना calculation नहीं करनी पड़ती। तो unfortunately ऐसे हम तो बच जाते हैं, काफ़ी बार ऐसे भी होता है if you are very smart and you can react, but नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी रही है जो ये फिल्म बोलती है मॉरल पुलिसिंग। डेली होता है कि एक लड़की कोई, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं एंड सम गर्ल इज वेयरिंग हॉट शॉर्ट्स, तो एक आदमी ऐसे देखते हुए चलेगा, मैंने कभी देखा नहीं। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ जजमेंट कि उसने क्या कपड़े पहने हैं या वो किसके साथ बात कर रही है, बहुत होता है अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू शो इन दिस मूवी एज वेल। भूमिका, दूसरा सवाल है कि नीरज सर के साथ आपने धोनी में काम किया है और ये वहाँ पे वो डायरेक्टर थे, यहाँ पे बतौर प्रोड्यूसर, तो मतलब कैसे एक रिलेशन जो है वो कैसे मतलब कितना बदलाव है, कितना सहज हुई है आप उनके साथ? I am extremely happy to work with Neeraj sir in any and every aspect. Like I said earlier, he's one person that जो सीखना चाहे, not just as an actor or as a technician, जो सीखना चाहे वो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे he is very calm, he is very composed, he is very clear on what he wants. Of course इस फिल्म में ज़्यादा मैंने सेट पे तो देखा ही नहीं शायद कभी। Like he said कि director sir was doing everything, but behind the scenes I'm sure things were managed beautifully. He's someone that who is in any and every circumstance, जो भी मेरी थोड़ी बहुत सर के साथ interactions रही हैं धोनी में और otherwise, in any and every given situation he's a very calm person, he's a very composed and ever smiling person. So इनके साथ का सर, thank you so much. It's been बस हो गया। It's been an amazing experience working with him.